Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamunatiravanachar Yamunatiravanachar Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatiravanachar Yamunatiravanachar Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Kargar Bhaktivinoda ki jai. Radha Madan Mohan, right? Ki jai. Hare Hare Bol. So, thank you. Nice to see so many people here. It really grew. When we came in, there weren't so many. And so many deluxe. And whoever invited me, thank you. That's Surdas. So please pray that Krishna will speak through me. Chaitanya Charitamrita says, Mukam karoti vachalam pangam langayate garim tat kripa tamaham bande Shri Gurundina Tarane. That by the mercy of Lord Chaitanya, then even a dumb man can speak eloquent poetry. A lame man can climb mountains. Blind man can see stars in the sky. So, and without the mercy of Lord Chaitanya, we're helpless. Even the most highly maturely qualified person can't speak anything about Krishna. So Srila Prabhupada is, we all like to hear about Prabhupada more than anything else. So he proved that. Of course, he was not crippled or dumb or anything, but he was uh, alone with no money.
and 70 years old. And somehow he managed to get to America. He'd been thinking about it many, many years, and almost 50 years, since his spiritual master told him to preach in the West. Told him the first day he met him, before he got up from paying obeisance, you're educated, you should preach the message of Lord Chaitanya. And then later, right before his spiritual master was leaving the planet, he told him the same thing again. So he had very small start. He was making a little Back to Godhead, which was just a newspaper, four pages, you know. And, but then he translated the Srimad Bhagavatam, started on. And we always say Prabhupada translated. But he wasn't just translating. Hare Krishna. If he's just translating, he could have done so many more books. और अगर उनको सिर्फ अनुवाद करना था तो वो बहुत साल पहले ही कर चुके होते. But he was writing. क्योंकि वो लिख रहे थे. He would have to study the commentaries of many acharyas and then उन्होंने बहुत सारे आचार्यों की टीकाओं को अध्ययन किया और फिर उनके तात्पर्य लिखे. To make it relevant for us. ताकि वो हमारे लिए उपयुक्त रहे. And it's amazing. It was relevant for the, the counter culture, they call it in America, the young people, completely rebellious. और ये बहुत उपयुक्त था कि ये हम सबको समझा सके अमेरिका के जो हम लोग थे. It was greatly admired by scholars. और बहुत ही जो विद्वान थे उनके द्वारा भी प्रशंसित था ये सब. And now all over the world. और अभी सारे विश्व में, India and all over the world, people are still reading those same purports. और भारत और सारे देशों में अभी वही तात्पर्यों का अध्ययन कर रहे हैं सब. So we have all these temples, especially India now is too much, it's. और भारत में ज्यादातर हम देख सकते हैं बहुत सारे नव नर्दिन का निर्माण भी हो रहा है. When Prabhupada first came back to India, he came with 50 devotees. जब प्रभुपाद जी पहले भारत में आए तो 50 भक्तों के साथ आए. And by that time he had, a few more cantos of the Bhagavatam and higher quality printing. And और उस समय में उनके पास काफी सारे भक्त और कुछ ग्रंथों का प्रिंटिंग इत्यादि हो गया था. The Krishna book. He just had the Krishna book. कृष्ण बुक तब तक अनुवाद हो चुका था. Nectar Devotion. भक्ति रसामृत सिंधु प्रकट हो चुका था. Teachings of Lord Chaitanya. भगवान चैतन्य में महाप्रभु की शिक्षामृत भी प्रकट हो गए थे. The Krishna book was a classic one. It was very high quality, printed in Japan. और ये सब प्रकट हो गए थे. And so many things happened that were just unbelievable to help Prabhupada accomplish this. First place, people joined him in America and supported him. बहुत सारे भक्तों ने ज्वाइन किया और फिर उन्होंने इस भावनामृत को आगे बढ़ाने का सहयोग किया. For 1 year, he didn't really get anything. एक साल तक तो कुछ नहीं हुआ था. Didn't look like it, but few people were getting interested. He got robbed a few times. कुछ ही लोग सिर्फ थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट रखते थे. Was staying with different people. One went crazy and tried to kill him. वो ऐसे स्थानों में रहते थे. कभी तो एक व्यक्ति ने उनको मारने का भी प्रयास किया. Prabhupada thought he was very nice, but then he, on drugs or something, he actually hit Prabhupada. तो विभिन्न तरह के अद्भुत तरह के लोग रहा करते थे. And he just ran out of the house and left everything behind. And और वो भाग गए प्रभुपाद जी अपने घर को परित्याग करके, सब कुछ अपना सामान छोड़ के. Then he was staying in another house where the man was happy. He had just a big empty room kind of, in a warehouse kind of. And Prabhupada was having a few guests. और प्रभुपाद जी फिर किसी दूसरे घर में रहे जो एक वेयरहाउस की तरह था. But the wife didn't like it. और उनकी पत्नी को ये अच्छा नहीं Had लगता. to leave that.
finally, he just asked the devotees, help me. There was a few followers. They weren't really devotees yet, but they liked him. तो उन्होंने जो कुछ भक्त, जो भक्त तो नहीं कहेंगे, जो उनको फॉलो करते थे, उनके से उनको कहा। And they found a little storefront, it's a very small place. एक छोटा सा स्टोर फ्रंट जिसको कह सकते हैं, वहां पे गए। Everyone who goes to New York wants to see that place, and then they just cry, and it was where everything started. It's very small. और प्रभुपाद जी ने जहाँ पे शुरुआत किया था, वो बहुत ही छोटा सा जगह था। In the time, it was in a very so-called low-class neighborhood, और समय के साथ, so it was very cheap. और बहुत ही सस्ता था उस समय में। Now that neighborhood is all अभी big वो towers, अभी बड़े बड़े वहाँ पे much different. मंजिले मकान हो गए। And we still have that one room, but the owner wants to sell the building, and it's a big, it's a तब भी different. वो रूम अभी भी है। We're trying to keep it because it's such a sacred place where Prabhupada started everything. तो हम उस जगह को अभी भी मतलब एक पूजनीय स्थान के रूप में हम उसको संरक्षण करने का प्रयास में हैं। So then he took devotees out chanting in the park nearby. और सब भक्त लोग नित्य जप किया करते थे। That got in the underground newspaper. और बहुत Underground is like for the hippies. Newspaper just for young people, looking for something different. It said Save Earth Now. Showed Prabhupada standing by this tree in the park. श्रील प्रभुपाद जी सबको सहयोग करने के लिए ये सब किए। Now they've preserved that tree. It's got a sign there. Hare Krishna tree. तो आजकल का सब ट्रेनिंग इत्यादि हो गया है। I met one man, he's a tour guide in New York City. और एक व्यक्ति है टूर गाइड न्यूयॉर्क शहर में। And he told me, I always take people to that tree. और मैं हर व्यक्ति को उस पेड़ के पास लेकर जाता हूँ जहाँ पर प्रभुपाद जी ने tell him this is where Hare Krishna started. और ये जगह है जहाँ से हरे कृष्ण आंदोलन शुरुआत हुआ था। I told him you should go to 26 Second Avenue. That's, he didn't know about it. तो मैंने कहा, I don't know if he ever started going there. तो वो व्यक्ति कहते थे कि ये बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ से हरे कृष्ण आंदोलन Because शुरू it हुआ। doesn't look like anything now. It, has a little Hare Krishna sign. It, nobody would know if they just walked by. There's no आजकल memorial. वो ऐसा दिखता नहीं है। Somebody arranged it. The tree, there's a memorial plaque. और किसी भक्त ने वहाँ पे एक आयोजन किया था जिससे अभी पता चलता है। But gradually, and in the process, Prabhupada, he came with a 1-month visa. प्रभुपाद जी 1 महीने के वीजा से आए थे। And that's a whole nother story. It's interesting, though. वो एक अलग कहानी है। Especially, it's very difficult for an Indian to travel. विशेष रूप से भारतीय को Anybody to get out of India. यात्रा करना भारत से अलग बहुत ही कठिन है। And even if they had money, they couldn't take it. और उनके पास धन भी हो तब भी 50 rupees ये a संभव day or नहीं है। something. But Prabhupada didn't have money. प्रभुपाद जी के पास धन नहीं था। And he had to get so many papers. उनको बहुत सारे पेपर्स की Passport. आवश्यकता थी। And then he found one man, Mr. Agarwal in Mathura, I think, or Agra. And he heard he had a son in America. He said, why don't you ask your son to वो किसी अग्रवाल जी से मिले sponsor? जिन्होंने उनका वीजा स्पॉन्सर कर दिया था। So the son did. और उन बालक ने सुना। And so Prabhupada finally got everything. Then he had to get a transportation. श्रील प्रभुपाद जी को वीजा तो प्राप्त हो गया, अभी उनको यहाँ से अमेरिका जाने की यात्रा का प्रबंध करना था। And he met Sumati Maharaj from the Scindia Steamship Company. तो फिर प्रभुपाद जी सिंधिया स्टीमशिप की मालकिन सुमति मुरारी She से really मिले। liked Prabhupada. She was a Pushti Margi. And Prabhupada was staying in her dormitory. प्रभुपाद जी को वो बहुत मतलब वो पुष्टि मार्ग से थी। And Prabhupada would give Bhagavatam class and she liked very much. और प्रभुपाद जी जो भागवतम का प्रवचन देते उनको बहुत अच्छा लगता था। And every day he would go to Bombay and try to preach. और वो हर दिन बॉम्बे जाकर प्रचार करते थे। And
you have to walk. I think he walked to Andheri or something and took the train or the bus. Because he had no money. And प्रभुपाद जी के पास धन नहीं था, उनको ट्रेन just बस trying to इत्यादियों में sell the जाया करता था, Bhagavatam. पैदल जाना He पड़ता had था। he had the books and somehow they got printed. उनके पास कुछ ग्रंथ थे। But he'd come back and say today was no good, but tomorrow will be better. He'd work out. प्रभुपाद जी शाम को आकर कहते आज तो कुछ हो नहीं पाया, कल बहुत अच्छा दिन रहेगा। And he was begging her for the ride. उनको उनसे वो भिक्षा मांग रहे थे ताकि वो अमेरिका जाने दे। And she didn't want Prabhupada to go. और वो प्रभुपाद जी वो चाहते नहीं थे कि प्रभुपाद जी जाएं। First place, she liked his classes, and so did all of her. पहला तो उनको उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता था। And she said, Swamiji, you'll die in America. प्रभुपाद जी मतलब ये It's cold, स्वामी जी वो There's बहुत no ठंडी food, जगह there's है, only meat, वहाँ बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पे कुछ खाने का भी नहीं है, और तो आप वहाँ पे आप मृत्यु को प्राप्त करोगे। And finally, Prabhupada he just said, I don't care if I die, I have to do the order of my guru. तो उन्होंने कहा भले मैं अब मृत्यु को प्राप्त करूं, लेकिन ये मेरा आदेश है गुरु का, मुझे इसको पालन करना है। So she gave him the round trip. तो उन्होंने एक यात्रा का प्रबंध कर दिया। So we just read the sponsor, he was married to an American girl. तो जो स्पॉन्सर थे अग्रवाल जी, एक अमेरिकन माता जी से शादी हुआ था। So right before he got on the boat, Prabhupada sent a letter, of his arrival. तो प्रभुपाद जी जहाज को पकड़ने से पहले या जाने से पहले एक पत्र उनको भेज दिया था अग्रवाल के पुत्र को। And 4 days, she got the letter, and it said, she told her husband, he's coming in 4 days. प्रभुपाद It took a month for the letter to get there. तो वहां पे जब वो पहुंचे पत्र, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर वो स्वामी जी आ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए बताइए। But fortunately, he's a very cultured, Indian man. He was a university professor. So he arranged, because Prabhupada landed in New York, and they lived in a small town, Pennsylvania, little. तो पेंसिल्वेनिया शहर में वो लोग रहा करते थे, तो उस बालक अग्रवाल ने स्वामी जी के लिए सब कुछ आयोजन किया। But Prabhupada said when he got off the boat, he didn't know प्रभुपाद जी जब जहाज में चढ़े night, तो उन्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। But somebody was there from the tourist agency or something. He had arranged, and they got him on the bus. So he had to ride the bus by himself for many hours. वहां से वो बस पकड़ के पेंसिल्वेनिया गए। And then they greeted him, and they got him a room. They didn't have room in their house, but they got him a room in America. It's called the YMCA. They just have rooms for poor people to stay. तो उनको स्वागत किया और फिर उनको YMCA में रखा गया। So her name was Sally Agarwal. उन माता का नाम सैली अग्रवाल है। The reason I'm thinking her, she just left her body a few days ago. उन्होंने अभी अपना प्राण त्याग किया कुछ दिन पहले। She had become a very good friend of the devotees. तो उन्होंने बहुत अच्छे बंधुत्व किया उन्होंने भक्तों के साथ। And she loved Prabhupada. और प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करती थी। But she had a relationship no one else had. तो उनका किसी का संबंध नहीं था। Because she had no idea what is a Swami. तो उनको ये भी नहीं पता था स्वामी जी कौन है, कैसे मुझे उसके साथ प्रस्तुति करना। She had no idea the Swami, Guru or anything. उनको आइडिया भी नहीं था गुरु कौन है, स्वामी कौन है। Like that. Like now I come here, there's a big kirtan, and I go and everybody thinks it's something, but Prabhupada wasn't like that. जैसे मैं अभी आया तो बहुत सुंदर सा कीर्तन और सारे भक्त का आयोजन था। प्रभुपाद जी जब गए थे तब कुछ नहीं था ऐसा। And Prabhupada had to stay somewhere and then come to her house for bath and. प्रभुपाद जी रहते कहीं थे, नहाने के लिए इनके घर आना पड़ता था। But they became very close, and the only thing she knew, this is a friend of my husband's father. तो बस वो इतना जानती थी, ये एक बंधु हैं मेरे ससुर जी के। So there's no record Prabhupada ever preached to or anything, but he was coming every day to her house and playing with the children and cooking for them. She saw Prabhupada cooking and said, that looks good. So Prabhupada cooked for that family. तो वो हर दिन प्रभुपाद जी वहाँ आया करते थे, उनके बच्चों से खेलते थे और हर दिन वो रंधन किया करते थे। And she said, that was the best, happiest month in my life.
तो वो जो 1 महीना वो रहे प्रभुपाद जी, तो उनको Then कहते she थे कि was young because her oldest child was 3 years old. क्योंकि बच्चा She बहुत might छोटा have था, been तो इनको 25 बहुत years. अच्छा लगा 1 महीना वहां रहना। And they were just friends, like uncle. And Prabhupada was learning about America. She arranged for him to speak at some churches and then college, तो उनको ऐसा लगा newspaper interview. उनके लिए आयोजन किया गया न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के लिए, किसी जगह पे प्रवचन करने के लिए। Because at that time, nobody had ever seen an Indian practically in तो America. उससे पहले कभी किसी ने Very भारत rare. के And of course, सन्यासियों her का husband, इत्यादि ज्यादा नहीं देखा था, but they never saw a Swami. कभी स्वामी देखा नहीं। Maybe on television, but that was different kinds of Swamis. उन्होंने टेलीविजन इत्यादि में देखा होगा, लेकिन सत्य में नहीं। So she thought the people are going to wonder, what is this? So she had the newspaper come and then she arranged some talks so people would know. ताकि उन्होंने She प्रवचन sold a few और books. न्यूज़पेपरों को बताया, ताकि लोगों को लगे कि स्वामी जी आए हैं। And Prabhupada maintained a friendly relationship with. और प्रभुपाद जी बहुत ही एक बंधुत्व रूपी संबंध रखा He उनसे। was keeping some of his books at her house, storage. तो उनके वहां पे ग्रंथ भी रखा करते So थे। there's letters he wrote, please send so many books to some shop. तो ग्रंथ में बहुत से And दुकानों में ग्रंथ रखा करते थे। so we had one letter. He said, I'm very glad that you're celebrating the birthday, number 3 birthday of your Miss Kamala Agarwal. That's the daughter. तो प्रभुपाद जी ने अगर उनको चिट्ठी लिखा था कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप अपने बच्चे का 3रा जन्मदिन मना रहे हो। He said, on this occasion, I should be giving her some gifts. तो इस अवसर पर मुझे कुछ उनको उपहार देना चाहिए। He said, but I'm a sannyasi, so I can only give blessings that, for prosperity and good health or something. और चूंकि मैं सन्यासी हूं, तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। And she can't read yet, but you can keep one set of the books, and when she gets grown up and educated, you give her those books. तो अभी तो छोटी बच्ची है, बाद में जब वो बड़ी हो जाएगी तो इस ग्रंथ जो मैं आपको उपहार के रूप में दे रहा हूँ, इसको पढ़ सकती है। So this little girl, she called Prabhupada Swami Jesus. उनको कहा, वो जो छोटी बालिका कहती थी स्वामी जी को, यानी They knew प्रभुपाद जी about को Jesus. स्वामी जीसस कहा करते थे। And Jesus robes and pictures. हाँ, उनके जो वस्त्र इत्यादि देखकर स्वामी जीसस कहा करते He was like a Swami. थे, स्वामी जी। Prabhupada said, I'm very honored that she's giving me this title. और प्रभुपाद जी, मैं बोलता था कि मैं बहुत सम्मानित। Jesus was also teaching the message of God, and I'm trying to do that also. प्रभुपाद जी कहते थे कि जीसस भी भगवान के वाणी को प्रचार करते थे, और मैं भी वही कर रहा हूँ। And he set a great example of, in spite of so many difficulties, so I hope I can do the same. बहुत सारी कठिनाइयों में जीसस जी ने भी प्रचार किया था, मैं भी बहुत कठिनाई से प्रचार कर रहा हूँ। Because the mother was Christian, American girl. जीसस को तो Prabhupada is praising Jesus and praying that he could be like Jesus. तो वो कहते थे कि मैं भी जीसस की This kind of तरह बन relationship सकूं, anyway. प्रचार That's कर how सकूं। Prabhupada was. He could just relate to anybody. और प्रभुपाद जी किसी के साथ भी रिलेट कर सकते थे। But later, everybody kind of had some idea of awe and reverence, but she didn't have that at all. बाद में बहुतों को पता चला किस तरह से स्वामी जियों का सम्मान करना चाहिए, उनको कोई पता नहीं था। Like the uncle, the उनको लगता था जैसे वो उनके चाचा इत्यादि हैं, ताऊ इत्यादि। And Prabhupada just took that role and just, was just very wonderful guest in her house. उनको लगता था पर स्वामी जी बहुत अच्छे गेस्ट हैं हमारे घर पे। Of course, when he went to the church or the university, then he would preach about और वो Krishna. चर्च और यूनिवर्सिटी में Very प्रचार gently. करते थे। Very gently, because he was just trying to learn about America. बहुत ही सामान्य रूप से प्रचार करते थे। Then after 1 month, he wanted to go to New York, because this is a very small town. 1 महीने बाद वो न्यूयॉर्क जाना चाहते थे, क्योंकि छोटा जगह था। The world, So he went off to New York. तब वो न्यूयॉर्क गए।
And she said she was crying. She thought, और what तब will he do in New York? तब ये रो रही थी. All alone. And when he came, all he had was these little rubber shoes, like just rubber slipper kind of shoe. And when he went to New York, it was getting cold. It was प्रभुपाद जी के लिए एक जूता भी लाए, November, बना कर दिया क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत ही ठंडी जगह थी. and he didn't know anybody. उनको कोई न्यूयॉर्क में पता नहीं था कौन कौन कहाँ पे. He just had the number of one Dr. Mishra. और एक डॉक्टर मिश्रा था, उनका नंबर था He's बस. also Indian, and he was a yoga teacher and a वो doctor. भी भारतीय थी और कुछ Quite successful. वो भारतीय थे, बहुत ही He didn't know him at all, but he hadn't communicated as far as तो I know. उनसे वो मिले भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था वो कौन है. But of course, when Prabhupada called, he said, he's respectful. और प्रभुपाद जी ने जब उनको कॉल किया तो वो बहुत ही सम्मान किया उनको. He let Prabhupada stay at his house. प्रभुपाद जी को अपने घर में ही रखा. And when his yoga students, Prabhupada, they all liked Prabhupada's kirtan. और जितने भी उनके योगा के जो शिष्य थे, उनको प्रभुपाद जी की शिक्षाएं बहुत अच्छी लगी. But this कीर्तन. Dr. Mishra, he's Mayavadi. लेकिन ये जो डॉक्टर मिश्रा थे मायावादी थे. So, but they were friends. Prabhupada would cook for him. तो प्रभुपाद जी ये दोनों दोस्त थे. प्रभुपाद जी उनके लिए खाना ही बनाया करते He थे. said Prabhupada's nice cooking saved his life. जैसे माता जी कहती थी, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे रंधन करते थे. But after a while, he said he gave him just one room in his yoga studio. It's a very small room, just barely room to sleep. तो फिर से एक छोटा सा एक उनको कमरा दिया गया जहाँ पे No कष्ट windows. से सोया जा सकता था. And Prabhupada would have to walk quite far to his house और प्रभुपाद जी को उनके घर तक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था. in New York City, and it was getting cold. And तो न्यूयॉर्क सिटी और वो वृद्ध भी you don't थे, know, but it gets quite cold. बहुत ठंडी भी थी वहाँ पे. It's I don't know what would it be here? Like 12 degrees, 15 degrees or something, like you wouldn't experience in Bombay. So, but Prabhupada tolerated it. Gradually, he got a little money and could get a better apartment प्रभुपाद जी ये सब सहते रहे and a few followers. और कुछ फिर अनुयायी हो गए. So, starting with, he had 40 rupees when he came. 40 rupees. उनके पास 40 रुपए थे. So now 40 rupees is absolutely nothing. अभी तो 40 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है. Then it was in America $5, तब के दिन में $5 के करीब था. which wasn't very much. ज्यादा नहीं था कुछ. Maybe you could, eat 2 or 3 one day. एक दिन का बस खाने के लिए जितना पैसा होता है. So he was living there, and if his diary, he would put expenses. और डायरी में वो सब लिखा करते थे कितना खर्चा हुआ है. Somebody donated $1, किसी ने $1 डोनेट किया, 25 cents for one cauliflower, किसी ने 50 सेंट दान किया. taking the bus. और बस कहाँ से गए. But he was writing letters all over trying to get people to buy the books. और वो चारों तरफ पत्र लिखा करते ताकि कुछ सहयोग He was प्राप्त हो going सके. to the bookshops. और ग्रंथों मतलब किताबों के दुकानों में भी जाकर ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास करते. But they wouldn't buy the books. They would say, लेकिन you can put them here, and if somebody buys it, we'll give you the money. तो उन लोग खरीदते तो नहीं थे, बोलते लेकिन हम आपको हमारे शेल्फ में जगह देते हैं ताकि आप ग्रंथ रख सको, जब बिक जाएगा तो मैं धन दे दूंगा. Sometimes somebody bought them. Sometimes the shop said, take them back. कभी कभी कुछ लोग खरीद के Nobody जाते heard थे. of Srimad Bhagavatam. किसी ने श्रीमद् भागवतम के बारे में Nobody सुना hardly भी नहीं heard था. of Krishna. उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था. American people at that time, they thought India is everybody's completely poor and starving, उनको बस यही लगता था भारतीय लोग बस भूखे मर रहे हैं and they're really stupid because they have so many cows and they don't kill them. और They said the Americans thought the Indian people they have all these cows, but they don't eat them. They're really stupid. तो उन्हें So बहुत they're all सारे starving. भारतीय हैं, इनके पास गाय हैं लेकिन वो गाय को खा नहीं रहे हैं. It's hard to believe. मूर्ख हैं इन लोग. That's how they thought. उनको यही भावना थी उनके दिमाग में. But they had a little idea some yogis were coming, but mostly they were just doing tricks. और ज्यादातर वहाँ पे योगियां इत्यादि आते थे, वो जब उनको सब भ्रमित किया करते थे. And Prabhupada had 1 month visa, so he had to keep. और इनके पास प्रभुपाद जी के पास add 1 महीने का वीजा ही था सिर्फ. Then finally they said, no, you can't. You have to go leave America.
और फिर उन्होंने वहां से They wanted, सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है। but at that time he could go to Canada because they had the Commonwealth. Indian citizen could go without visa. वो बिना वीजा के कनाडा जा सकते थे। Like in the early days in India, many British devotees, because they could come without a visa. बहुत सारे Australian, पहले के दिनों में जो ब्रिटिश के they भक्त could आया come to करते थे, India. बिना वीजा के आया करते थे। Now they don't have that anymore. आजकल वो अलाउ नहीं करते। Now India is independent now. तो इंडिया भी थोड़ा शक्तिशाली बन गया। So in Canada, of course, there were some devotees, and gradually different people helped him, and he was able to get a और धीरे धीरे बहुत भक्तों ने उनको सहयोग किया। residency as a religious person or something. ये भक्त रूपी व्यक्ति हैं, इनको सहयोग They करना gave चाहिए। him very good facility after the lawyers. उसके बाद बहुत अच्छा आयोजन किया गया उनके लिए भक्तों के द्वारा। So he came back, and then it was New York, San Francisco, and then here and there, and then London, and then from there he would come to India. तो उन्होंने फिर वहां से बहुत सारे अमेरिका के देशों में, फिर इंडिया भी वापस आए। So when Prabhupada was in India, एक बार प्रभुपाद जी जब भारत में थे, nobody paid much attention to him. ज्यादातर लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया था। But when he came back with the foreign disciples, then he was big news. जब वे अपने विदेशी शिष्यों के साथ आए तो सब आकर्षित हो गए। You know, there's big white people dancing in the streets. And तब उन्होंने देखा ये सफेद विदेशी भक्त लोग he सब was a hero then. नृत्य कर रहे हैं रास्तों में। First he traveled all over India उन्होंने पूरे भारत में with a big group of devotees. अपने भक्तों के साथ कीर्तन इत्यादि प्रवचन करते रहे। Then he dropped them off in Delhi and Bombay and दिल्ली में गए, बॉम्बे में गए। They really got started in Bombay. बॉम्बे में। And then, so when he was living at that Sumati Maharaj, she lived at the Juhu beach, सुमति महाराज right on the beach, जूहू बीच में रहा करती थी, right at the end of the road, you know, एकदम opposite the temple. रोड के अंत में। So when Prabhupada went out every day, he saw that land, the Juhu land. एक दिन प्रभुपाद जी ने वो जुहू का जहाँ पे आज मंदिर है उस जगह को देखा। That was in like 1962, ये 63. 1962 के आसपास की बात है। And he somehow, that land was like a jungle, and और वो जो जगह था तब course the समय houses में were in the जंगल back. वंगल इत्यादि थे। But he thought this would be a good place for a temple. तब उन्होंने संकल्प मन में ऐसा सोचा कि अगर मुझे ये जगह मिल जाए तो मैं यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर निर्माण करूंगा। At that time, Juhu was not developed, तब जुहू कुछ डेवलप नहीं हुआ था। but it was for sale when he came back, very cheap. जब वो वापस आए तो काफी कुछ बदलाव था। So he bought it, फिर उन्होंने वो खरीद made लिया। the payment. But that's a whole long story that the owner was, he was just cheating. He had already sold it to several other people. फिर ये cheated बड़ी them. कहानी है, जो वहाँ का Mistake जो that ओनर था bought- उन्होंने बहुतों को धोखा दिया था, बहुतों को बेचा था वो लैंड। So he thought this sadhu would be easy to cheat him, you know. तो उनको साधु मिल गया, उन्होंने सोचा इस साधु को भी हम चोरी कर लेते हैं। It was a big fight, Prabhupada. और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। And all the devotees said, nobody will come to this temple so far away. बहुत सारे भक्त तो निरुत्साहित हो गए। Prabhupada had, but they did it anyway because Prabhupada, they loved him. But nobody believed that anybody would ever come there. तो कभी भक्तों ने ये सोचा नहीं था कि ये जो जगह है ये हमको वापस मिल जाएगी। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था। And I was there right after it opened, and very few people were coming. और जब इसके मतलब ओपन हुआ मंदिर तब बहुत ही कम भक्त थे। We had about 30 devotees, हाँ, सिर्फ 30 भक्त थे। mostly, महाराज भी थे वो वहाँ पे। mostly foreign, अरे वाह। you know. ज्यादातर भक्त सब फॉरेन के थे। The American immigration came every month and checking everybody, you know. और अमेरिका के इमिग्रेशन हमेशा हर महीना चेक करने There आए। were a few Indians, some of them were there just to cheat and get money. And कुछ भारतीय रहा करते थे some were very good. जो भी पैसा चुरा लेते थे। Some were very good, like Haridas, कुछ भक्त बहुत अच्छे थे, हरिदास प्रभु की तरह। ITV, Haridas of ITV was very, आईटीवी हरिदास प्रभु बहुत अच्छे थे। he was making all the Bollywood people life members, तब वो लाइफ मेंबर्स बनाया करते थे जितने बॉलीवुड के सब and लोगों then को। they would come to the temples. But gradually people started coming. धीरे धीरे लोग The आना शुरू deities किया। were so beautiful.
और रासबिहारी जी बहुत सुंदर हैं The restaurant was good. और रेस्टोरेंट भी बहुत And लोगों को आकर्षित करता था। now every day 10,000 people. आज हर दिन 10,000 से भी ज्यादा भक्त आते हैं। Saturday 50,000. शनिवार को Su- 50,000 लोग आते Sunday 1 lakh. हैं। रविवार को 1 लाख लोग आते हैं। Janmashtami 10 lakhs. जन्माष्टमी में 10 लाख लोग आते हैं। So, but श्री राधा not रासबिहारी only की Juhu, जय। not only Juhu now here. यहाँ भी देखिए, आप देखिए बहुत Mirror भक्त आते Road, कि नहीं। मीरा रोड में, Mirror Road even more, I think. मीरा रोड में भी ज्यादा And, लोग आते हैं। and गिरगांव चौपाटी, Chopati, चौपाटी में भी आते and that's another mystical one. Prabhupada had a program at that Gita Bhavan, it's still there. हैं। प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिससे बहुत लोग जुड़े। And when he came out, he looked down the road, he said there should be a temple here. और जब वो बाहर निकले बोला यहाँ भी एक मंदिर होना चाहिए। Nobody thought about it, really. ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। But that's where they ended up starting the temple. और वहां पे भी एक मंदिर अभी Just by chance. ये सब प्रभुपाद जी की कृपा So, है। Prabhupada, Krishna just did everything for him. And so we're all here by great mercy. And there's not only that, but now there's temples all over the world, thousands. We have no idea how many temples. तो हम सब कृपा के, प्रभुपाद जी की कृपा से आज सब यहाँ बैठे हुए हैं। हमें पता नहीं इसका और कितना विस्तार होगा और ये कैसे संभव हो पाया है। You have a temple, then you have so many Bhakti Vriksha groups, and then everybody has a temple in their house. And और आज हम देख सकते हैं कितने भक्ति वृक्ष के ग्रुप भी बने हैं और सबके घरों में भगवान के ऑल्टर्स भी हैं। in some places like the Middle East, there's no temple, but devotees have really big temples in their house. You know, तो मिडिल ईस्ट big में altars and so many deities and puja all day long. मिडिल ईस्ट में देखा जाता है वहाँ मंदिर तो उतने नहीं है, लेकिन सबके घर में भगवान के ऑल्टर्स हैं और सब अच्छे से, बहुत अच्छे से अपना भजन क्रिया कर रहे हैं। We did just a meeting in Juhu for the Western India, and Gauranga Prabhu was saying, you have to tell us, you know, we have no idea where all the centers are. We don't know, you know, everybody has to tell us all the different preaching centers. और It's spreading so much. WIDC की मीटिंग में भी चर्चा हो रहा था। गौरंग प्रभु कह रहे थे Magic. कि बहुत सारे केंद्र प्रकट हो रहे हैं और उनका सबका लिस्टिंग होना चाहिए। And so many books. और इतने सारे ग्रंथों का वितरण भी हो रहा है। In Prabhupada's time, the devotees in India said, it's impossible to sell the books in India. तो प्रभुपाद जी के समय में भक्त लोग कहते थे कि भारत में we have Gita, I have, they still do, but ग्रंथों का वितरण करना बहुत कठिन है। devotees kept trying and gradually. That's why he made life membership. हम लोगों ने लाइफ मेंबरशिप भी इसीलिए शुरुआत किया था। Offer them some stay in the temple and this and that, and they give the books for free. और हम लोग क्या करते हैं कि ताकि उन लोग थोड़े दिन 3 दिन रह भी सके और उसके साथ ग्रंथों का गिफ्ट दे देते हैं। That way they'd get the books with it. उनको एक ग्रंथ प्राप्त हो जाते हैं। And the first Krishna book was printed, and we were confused. And on the inside page it said, "Not for sale in India." तो जो भी पहले के दिनों में जो कृष्ण बुक प्रिंट होता था, तो उसमें लिखा होता था नॉट फॉर सेल इन इंडिया, यानी इंडिया में आप इसको बेच नहीं सकते। Couldn't understand why. बोले ये किस लिए कहा जाता था? But that was because when they import, then you don't have to pay the tax. ताकि जब इंपोर्ट किया जाए कोई टैक्स इस पर ना लगे। Prabhupada always knew everything. प्रभुपाद जी का ये सब दिमाग था। देखिए, If they think you're going to sell it, you have to pay big tax. अगर हम बेच सकेंगे तो उसका टैक्स लगेगा, लेकिन ये सब विदेश चले आते थे तो कोई टैक्स इसमें नहीं लगता। That book was very special. और कृष्ण बुक बहुत ही स्पेशल है। Prabhupada engaged so many artists. The first Krishna book had 64 paintings in it. पहले के समय में वो जो 64 and it पेजेस was का एक big. बुक, It इतना was बड़ा, inches. It was 10 by 12 inch. 10 by 12 इंच का था। Big. And very big writing and बड़ा बड़ा लिखा हुआ था ड्राइंग के साथ। very high quality, printed in Japan. बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रिंटिंग था। And it was selling like anything in America and Europe and और अमेरिका यूरोप में बिकते थे सब। still is. सेलर्स। So Prabhupada designed the whole book. The artists were all brand new. He just told them chant Hare Krishna and paint, and it came out all amazing paintings.
और प्रभुपाद जी जितने भी आर्टिस्ट सब ड्राइंग करते थे इनको कहते हरे कृष्ण का जाप करो और तब उसके बाद प्रकट करो। आप आज देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट हुए हैं। So now we have so much access to Prabhupada, और अभी हम देख सकते हैं हमारा बहुत एक्सेस है प्रभुपाद जी को। so many books about him, कितने सारे ग्रंथ, so many videos. इतने सारे वीडियो। And even when he was present, we didn't have that. हाँ, जब वो मौजूद थे तब भी इतना नहीं था। We didn't have recorded lectures, very हमारे few. पास तब रिकॉर्डिंग का लेक्चर नहीं रहा करता था। We didn't, a few recorded kirtans. And और कुछ कीर्तन रहा करते थे। we just had the books. हमारे पास सिर्फ ग्रंथ रहा करते And थोड़ा we बहुत। didn't know where he was. Prabhupada was traveling and there was only regular mail. प्रभुपाद जी कहाँ पे ये भी नहीं हमें पता रहता था। So, but still it just kept expanding because it's so wonderful. And now it's growing faster and more and more. This is all just one man all by himself, so और we आज have so much advantage now. We have all these temples. ISKCON is famous. और आज हम Yeah. देखते हैं, आज हम बहुत ही तकनीकी रूप से हम बहुत उन्नत हैं In और most बहुत प्रचार हो countries, रहा है most countries very popular. और बहुत देश में ये बहुत पॉपुलर है। Prabhupada is well known for his books. And प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों के द्वारा जाने जाते हैं। when devotees are feeding, they give numbers how many billions of plates of prasadam, are going out every day. इतना प्रसादम के द्वारा, इतने ग्रंथों के द्वारा, इतने मंदिरों के So द्वारा, many books, Bhagavatam sets people are buying इतने सारे भागवतम सेट खरीद रहे all हैं over the world, different, पूरे विश्व में, like anywhere, हर जगह। not only at the temple, and there's people that hardly know about it, but they're just attracted. The Krishna is all attracted. तो भक्तों के प्रचार से श्रीमद् भागवतम आगे बढ़ रहा है। But when Prabhupada got off the boat, he got back on from Boston. He just walked around a little bit, and then he had to get back on to go to New York. तो प्रभुपाद जी जब बॉस्टन से उनको न्यूयॉर्क जाना था, And he wrote a poem, and he said, "I don't know why you brought me to such a horrible place." तब उन्होंने एक पोएम लिखा जिसमें गद्य लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान मुझे नहीं पता आप इधर मुझे क्यों लाए हो। Everyone here is a passion and ignorance. और यहाँ पे सब रजोगुण और तमोगुण में है। Because he saw it, you can imagine coming from Calcutta in that time, और उस from समय वो कलकत्ता Vrindavan, से आए। you know, you go to America and everywhere there's restaurants advertising beef और and वहाँ पे सब जगह पे whiskey रेस्टोरेंट में shops सब मांस, everywhere, गो मांस खा रहे थे और सब advertising पागलों की for तरह नाच every रहे थे sinful activity, और everywhere. अवध संगम इत्यादि चल रहा था। बहुत ही खराब स्थिति थी। So he said, I don't know how they will change. How मुझे नहीं can I? पता इनमें मैं कैसे बदलाव ला सकता हूँ। But he said, I have faith in I have no qualification, but I have faith in the holy name. तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई योग्यता नहीं है लेकिन मुझे पूरा भरोसा इस हरि नाम पर। And if somehow they'll hear the message of Srimad Bhagavatam, और किसी प्रकार से अगर श्रीमद् भागवतम के इस so he आदेशों को, just उपदेशों को लेंगे तो chanted. All he had was a kartal, उनके पास सिर्फ एक करताल था, no mridanga, no harmonium, कोई मृदंग नहीं, कोई हारमोनियम नहीं, one little kartal. सिर्फ करताल। And he's chanting. Some of the hippies would come with different kinds of drums and stuff, और वो हरे कृष्ण का flutes. कीर्तन किया करते थे। कोई फ्लूट लेकर आ गया, कोई छोटा सा ड्रम लेकर आ गया इत्यादि। They liked Prabhupada singing. They liked the उनको music. बहुत अच्छा लगता प्रभुपाद जी का कीर्तन। So they were chanting the holy name, and then some of them were reading the books, and now we have this incredible society. और पवित्र नाम का कीर्तन करते उन्हें बदलाव आया। So we're just begging everyone, take it very seriously. Read the book so we know, Krishna. तो इसीलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके इन ग्रंथों का पाठ कीजिए और नाम का जाप कीजिए। Read about Prabhupada. प्रभुपाद जी के बारे में पढ़िए। So many books are available now. इतने सारे ग्रंथ हैं, Even Hindi lectures. और इतने सारे प्रवचन हैं, I'll record it. रिकॉर्डिंग्स हैं। It's another miracle. ये एक अद्भुत चीज है। Prabhupada, at that time to record was, उस समय में ये सब नहीं संभव था। the recorder was like the size of that harmonium someone was carrying there. Yeah, like that, 10 kilos.
रिकॉर्डिंग का तब जो इंस्ट्रूमेंट रहा था या मशीन रहा करता तो 10 किलो का इतना बड़ा सा रहा करता था। And Prabhupada only get somebody donate an old one, और प्रभुपाद जी को ये सब डोनेशन में किसी ने कुछ So कुछ किया, the tape was a big reel, and they break down a lot. और ये जितने भी यंत्र Jam on. इत्यादि लोगों ने दान में दिया, But he recorded everything. और सब तब के समय का रिकॉर्डिंग है ये जो आज And आपको। somehow devotees saved, in spite of all, they were moving different places, and and managed to protect and save all that. और ये भक्तों ने बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही Still digging up एकाग्रता more. से इन सब रिकॉर्डिंग्स को प्रिजर्व किया। So Krishna was really making a lot of arrangements. और कृष्ण ये सब आयोजन कृपा से कर रहे थे। That's what you say. If you surrender to Krishna, and Prabhupada was totally surrendered, just क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के चरणों में पूरे शरणागत थे, इसीलिए संभव हुआ। he wrote in that poem at the end of it, he said, वो उस "Not पोएम chow, में not लिखते हैं, chow, not chow. I am a puppet. If you want, make me dance, make me dance, make me dance." तो वो कहते हैं उस पोएम में कि नचाओ नचाओ, मुझे जैसे आपको नचाना है नचाओ, मैं एक खिलौना हूँ आपके हाथ में। So Prabhupada danced, and he really danced also in the beginning. He jumped and danced and taught the devotees. और प्रभुपाद जी सच में ही बहुत नाचे कीर्तन किए, उसी का आज आप देख सकते हो So within a प्रभाव। few years, all over America, people were chanting all day in the streets. और कुछ ही सालों में भक्त लोग अमेरिका में जाप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे Then थे रास्तों में, England, France, इंग्लैंड में, फ्रांस में, Germany, जर्मनी में, Australia, इटली में, and so many people joined. और इतने भक्तों में बदलाव आया। And then he took these crazy people to India. और कितने And in Prabhupada's time, he had very few Indian disciples. प्रभुपाद जी के समय में बहुत ही कम भारतीय भक्त थे। Gopal Krishna and Swami and Lokanath Swami and गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज a few others, Haridas, और हरिदास some प्रभु, ladies, कुछ माताएं, and some orphan children, few, not very many. बहुत ही कम भक्त हैं रात में। But now, और आज unlimited, everywhere in the अनलिमिटेड, world. अनगिनत अनगिनत भक्त है सब भारत में। And now the Indian people are everywhere in the world. और भारत के अब They लोग weren't उसको at स्वीकार that कर time. रहे हैं अच्छे से। Now there's huge, cities of only Indians practically in America. तो आज के दिन में भारतीय लोग अमेरिका में बसे हुए भी भक्त हैं। Where I grew up, there was one Indian yoga teacher. He was a professor in the university, Sanskrit teacher. एक संस्कृत के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में भारतीय। And I think I saw one girl on the campus. मैं उनके Otherwise, कैंपस में देखा, I never saw Indian people, never. मैंने कभी भारतीय देखा नहीं था इससे पहले। Now that city has the biggest Indian population in America. आज उस सिटी में सबसे ज्यादा भारतीय रहा करते They हैं। have big companies, only Indians. बड़े बड़े कंपनी है जिसका ओनर भी इंडियंस है। Microsoft headquarters in Seattle, 25,000 Indian people. और 25,000 माइक्रोसॉफ्ट में सिएटल में लोग वहाँ पे भारतीय हैं। And doctors, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। I don't know now exactly, but last time I heard, something like 30% of doctors in America are Indians. 30% अमेरिका में डॉक्टर्स भारतीय हैं। If you go in a hospital, Dr. Agarwal, Dr. Mishra, Dr. Gupta, you hear announcements all the time. And the NASA is like 15%. नासा में 15% और बाकी डॉक्टर्स And 30%। so many other, and then Indian companies are there. Nobody knows they're Indian, but और इंडियन कंपनीज के बारे में बहुत Software कुछ जानते नहीं। companies. सॉफ्टवेयर इत्यादि में कितने लोग हैं all these companies are, किस so कंपनी में? they're all over the place, and they're supporting, and the temples are growing and growing, and और उन लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारे इस मोमेंट को, और मंदिर आगे भी बढ़ रहे हैं। but all because one Indian क्योंकि No. एक भारतीय left India. उन्होंने Everybody देश का thought त्याग किया, none of his godbrothers would do that. और उनके कोई गुरु भाई ने उनके साथ न थे, They thought it's like Columbus, you just fall off the edge of the world. और बहुत दूर गए थे, And those people are so uncivilized, there's no way. और वो सभी अनसिविलाइज्ड लोग इत्यादि रहा करते But थे। there's a sloka in the Bhagavatam, Kirata, Unandra, Pulinda, Pukasha, Yavana, Kashadaya, like खास even the lowest
classes, so-called low-born people, they can all be purified by the holy name. तो ये जितने भी भागवतम के श्लोक के अनुसार ये जितने भी तरह के प्रकृति के लोग हैं ये भी पवित्र नाम के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं. One priest in an Indian, South Indian temple, they had that verse on the plaque. He said, your Guru Maharaj, he believed that. We didn't believe it. और एक दक्षिण भारत में एक मंदिर में Prabhupada had एक faith. प्लेकार्ड लिख रखा था, उस एक श्लोक लिख रखा था. It doesn't matter what birth someone has, or, what background, or what kind of sinful activities they've done. If they will chant the holy name, they'll change. तो उसमें लिख रखा था ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसने किस योनि मतलब किस मनुष्य के किस घर में जन्म लिया है, कैसी स्थिति है, कितना पापी है, अगर वो पवित्र नाम का जाप कर रहा है तो पवित्र है. Lord Chaitanya preached to everyone. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रचार किया. So now we have so many temples. तो इतने सारे मंदिर हैं. Every home to be a temple, and और हर एक घर अब मंदिर में परिणत हो गया. For the grihastas, yare deke kahade se Krishna Upadesh. तो गृहस्थ भी बहुत सारे हैं. Wherever you go, जहाँ भी whoever you meet, जिससे मिलते हो, tell them about Krishna. उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ. Yare deke tare deke, forget now. Amara agnoi hoy tare e desh. You tell them about Krishna. Chant the holy name. तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि दूसरों को ऊपर कृपा करो, किस तरह से उनको भागवतम दो, उनको प्रसादम दो, हरिनाम का जाप करने के लिए, ताकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड में बदलाव आ सके. Absorbed in the news and all the Kali Yuga things. It's just Kali Yuga. All the wars, all the diseases, all the so-called this and that. It's all Kali Yuga. That's all. Nothing else. Mental illness, anxiety, it's all Kali Yuga. तो कलियुग के ये गुण हैं. हमेशा लोग चिंतित रहेंगे, बहुत ही गुस्से में रहेंगे, इत्यादि इत्यादि. If we want to change things, we have to chant the holy name. That's what Kali will run away. अगर आप बदलाव लाना चाहते तो इस कलियुग में हरि कृष्ण महामंत्र का जप. So now there's so many homes without Kali because people are chanting. There's no intoxication, there's no gambling, there's no, illicit sex, there's no meat eating, तो आज because of chanting the holy name. आज बहुत सारे घरों में कली का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि लोग आज ये चार पापों में नहीं लगे हैं. He's trying very hard to promote, कली बहुत प्रयास कर रहा है कि आपको पद भ्रमित करने के लिए. Everything is on the internet now. सब इंटरनेट की कृपा से. You can get virtual everything. You can और get आप virtual प्रत्यक्ष रूप sinful से वो अपने activity. को गिरा सके. You don't have to even do it. But for the devotees, no, they're chanting the holy name, they're reading Bhagavatam, they're dancing, and everything's fine. और नाम जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और वो कली से परे हो जा रहे हैं. So just remember, if you think you're difficult times or trouble, what Prabhupada went, and he also was very poor health. अगर आप देखो कि आपको लगता है आप बहुत कष्ट में स्थिति है, तो प्रभुपाद जी का उदाहरण देखिए. He had 2 heart attacks on the boat. उनको 2 हार्ट अटैक आया था जब वो जहाज में जा रहे थे. And there's a book, the diary on the boat. वो डायरी में लिखते हैं सब. And he was just writing, casually. वो ऐसे ही लिखा करते थे. Waves were and the weather and. किस तरह से लहरें उठती हैं इत्यादि. And what he was thinking, and then sometimes he wrote about Krishna, and one day it just says in very big print, disaster. और वो उसी डायरी में लिखते हैं कि एक दिन उनको बहुत ही कष्ट हुआ तो उन्होंने लिखते डिजास्टर, यानी बहुत कष्टमय स्थिति. 5 days are blank. 5 दिन बहुत कष्ट हुआ. So he was like practically unconscious. He's all alone on the boat. There was just a few workers. एक तरह से वो बेहोश ही थे. Nobody knew probably. और किसी को ये पता भी नहीं था. But somehow Krishna saved him. किसी प्रकार से कृष्ण ने उनकी रक्षा की. And when he was first in New York, he had another either stroke or heart attack. तो पहले वो न्यूयॉर्क में गए थे. But he just did incredible energy and work. And so we have to pray that we can, try as best we can for everybody. You don't have to be worldwide, but wherever your neighborhood, become a guru. तो ये आदेश था कि आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, children. हाँ,
chant and be happy. That's तो उन्होंने कहा जप कीजिए और सब प्रसन्न चित्त। so. Thank you very, very much. तो आप सबको धन्यवाद। And the best thing, Jayapataka Swami said when, he's talking about Bhagavad Gita, nobody's very interested. But when you talk about Prabhupada, everybody likes. अगर हम भगवत गीता में प्रवचन करें तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं तो लोग बहुत हर्षित हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। Boy, done good, So take over the world and slowly, people won't know what happened. No war, no revolution, no, just chant Hare Krishna and changing the atmosphere. और अभी जो स्थिति है इस हिसाब से हमको नाम का जप करना है और इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को बदल देना है। Jai. Srila Prabhupada ki jai. Madan Mohan ki jai. Karga Bhaktivinoda ki jai. So I have to go. I have an online something. This one question, somebody wants to know, how did you meet Srila Prabhupada first time and what seva you did for him first time? I never met him exactly. I met the devotees. पहले तो मैं प्रभुपाद जी से ना मिला, मैं भक्तों से मिला था। And I read some books. और मैंने कुछ ग्रंथों का पढ़ा था मैंने। Most of us met Prabhupada. फिर मैं प्रभुपाद जी से मिला। So the seva was to distribute the books. तो मैं वही बात कहा प्रभुपाद जी ने, ग्रंथों का वितरण करो। When I actually saw him as we went to San Francisco for Rath Yatra. मैंने सैन फ्रांसिस्को में उनको पहली बार रथ यात्रा में देखा। I'd already been with devotees for 6 months. और भक्तों से मैं 6 महीने से अनुरोध कर रहा था। So I'm from distance. तो मैंने कहा मैं यहाँ से हूँ। By that time, Prabhupada in America, he was not close with everybody. He was protected, so he could translate. तब के दिन में प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन इत्यादि बहुत किया करते थे। Just walk in his, in the early days, anybody could walk in and out of his room. पहले के दिनों में India, he was like, कोई भी आकर मिल सकता था प्रभुपाद जी से, लेकिन तब प्रभुपाद जी बहुत व्यस्त रहा करते थे ट्रांसलेशन इत्यादि so में। our service was in separation, distributing books, तो मैं ग्रंथों का वितरण इत्यादि किया करता था। That's the best service, he said. ये मेरा पहला सेवा। But by the books, everyone can meet him by the books. आप ग्रंथों का वितरण कीजिए ताकि दूसरों पर कृपा प्राप्त हो सके। He put everything in the book. क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब कुछ ग्रंथों में लिख रखा है। None different than him. He just, the Vapu entered into the Vani. That's all. और वापु और वाणी ये full सब वाणी में लिख रखा है प्रभुपाद जी ने क्या करना क्या नहीं। All right. ठीक है। So now we know so many things because there's so many books and so many. We've heard Prabhupada, the recordings and him describing all this, early days and. आज के दिन में तो बहुत सारे तरीके से हम एक्सप्लेनेशन इत्यादि होता है, We know. सब कुछ रहता है। I wasn't with him in those very early days. तब के दिन में बहुत Few devotees were. कुछ भक्ति इत्यादि रहा करते थे। Okay. So. परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज की, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, there's an humble request. Nobody leaves before Maharaj leaves, okay? After there will be performing some kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Someone else chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा। कृपया कूपन लेके जाइएगा प्रसादम के लिए। कूपन है, कूपन के बिना प्रसादम नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। प्रसाद के लिए कूपन अनिवार्य है, बिना कूपन के आपको प्रसाद नहीं मिल पाएगा। प्लीज कूपन लेके जाइए।